Hello students, welcome to TGS Adda 24/7 YouTube channel. This is Amit Singh, Faculty of Science, and I welcome you all to this special session of DSSSB Nursing Officer for 2024 examination. We are having 1507 seats in this year, and for gaining a seat in Delhi Subordinate Service Selection Board, we need to have a proper and strong hold on the MCQs that will be asked in our nursing section, which is the technical part of our examination, DSSSB nursing officer examination. So basically we have two parts in nursing officer examination. The first part consists of the non-technical part, जहां आपको अंग्रेजी, हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, social awareness and general knowledge के ऊपर सवाल पूछी जाती हैं. And the second part, which is called the technical part, उस पे हम नर्सिंग रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, एज इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी ऑफ बोन, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड अदर important topics related to nursing that is included in our syllabus. Today this session is dedicated to one of those chapters that will be asked in your DSSSB nursing officer examination in 2024, and the topic for today's topic is digestive system. We are having 30 questions in this. Let's start, and we'll be discussing real fast, and we'll have a proper hold on the questions that will be visible to you in seconds later. Which one of the following is the correct matching of the site of action and the given substrate, the enzyme acting upon it, and the end product? इनमें से कौन सा ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू साइट ऑफ एक्शन, सबस्ट्रेट एक्टिंग अपॉन, द एंजाइम एक्टिंग एंड द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इज गिवन करेक्टली? इज इट A, B, C or D? What will be the correct option? The first option is stomach is the site of action. Lipase is acting on fat and breaking down into micelles. That is incorrect, because lipase, when acts on fat in stomach, it breaks into micelles. Is it correct? No, because lipase, when they will act on fats, they will not break down fats into micelles. They will be breaking down into monoglycerides. So first option is incorrect. Second option, duodenum is the site of action. Trypsin is acting on triglycerides and converting into monoglycerides. Is it correct? Trypsin acting on triglycerides converting into monoglycerides, that is again wrong, because this time trypsin will not act, lipase will act, because trypsin is a protein digesting enzyme in getting secreted from pancreas, and here the site of action is duodenum and the substrate is triglyceride. So if it is triglyceride, some fat digesting enzyme must be present, so option number B is also incorrect. Option number C, starch amylase disaccharides, it is correct. And option number D, pepsin acting on proteins breaking down into amino acids, this process is correct, but the site of action is incorrect. It happens in stomach. तो सही जवाब क्या हो जाएगा? Option number C is the correct option. अगला सवाल, which one of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disorder? तो water soluble vitamins कौन होते हैं? तो water soluble vitamins होते हैं vitamin C. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं आपके विटामिन C एंड B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, राइट? इनमें अगर विटामिन C को देखें तो यहां रहा, और B कॉम्प्लेक्स में D और A आ गए, मतलब कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर D is a fat soluble vitamin. Retinol is a fat soluble vitamin, so option number C will be the correct option. So which one is a fat soluble vitamin? तो retinol, जिसकी deficiency से ज़रफ़थैल्मिया हो जाती है, that is a fat soluble vitamin. Option number C is the correct option. अगला सवाल, question number 3, a person who is on a longer hunger strike and is surviving only on water. बहुत दिनों तक वो उपवास पे है, भूख हड़ताल पे है और सिर्फ पानी पे ही जी रहा है, तो किसकी कमी हो जाएगी? मोर ग्लूकोज, नॉट पॉसिबल बिकॉज इज नॉट टेकिंग कार्बोहाइड्रेट. लेस अमाइनो एसिड्स, नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ देयर इज अ लॉस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बॉडी में जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं उसको लिवर कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. थर्ड, मोर सोडियम, नॉट पॉसिबल बिकॉज ही इज ओनली टेकिंग वाटर. And yes, less urea will be present because ultimately the metabolic disorders will prevail and there will be lower amount of urea because of nutrition. Because of nutrition, nitrogenous wastes are being excreted by the path of metabolism. लेकिन यहाँ nutrition तो बंदा ले ही नहीं रहा, सिर्फ पानी पे जी रहा है, तो obviously there will be less urea in his urine. Option number A is correct.
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया शोज लार्ज इमैच्योर न्यूक्लिएटेड एराइथ्रोसाइट्स। लार्ज इमैच्योर न्यूक्लिएटेड एराइथ्रोसाइट्स को हम मैक्रोसाइट्स कहते हैं। एंड मैक्रोसाइट्स एराइथ्रोसाइट्स कब बनते हैं? व्हेन डू एराइथ्रोसाइट्स और आरबीसी कन्वर्ट टू मैक्रोसाइट्स? व्हेन देयर इज अ deficiency of folic acid and especially cobalamin, and cobalamin is present in vitamin B12 which is called cyanocobalamin. So correct answer will be option number B. I hope it is understood. Next question, a patient is generally advised to specially consume more meat, lentils and eggs in diets only when he is suffering from. तो एक पेशेंट को अगर प्रोटीन रिच डाइट दिया जा रहा है, दैट मींस ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। एंड प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में जो दो डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज क्वाशियोरकोर एंड मरास्मस, सीन इन लेस देन 5 years of age of babies, and that is क्वाशियोरकोर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मरास्मस तो दिख नहीं रहा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, secretin and cholecystokinin are digestive hormones. They are secreted by the duodenum part of small intestine, which is the first part of small intestine. Option number C will be the right answer. Come on, give your answers fast. Getting my point? Clear है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, which group of 3 of the following 5 statements contains all the 3 correct statements regarding beriberi? आपको 5 बयान दिए गए हैं। 3 ऐसे बयान हैं जो बेरीबेरी के लिए सही हैं, 2 ऐसे हैं जो सही नहीं है। क्रिपलिंग डिजीज doesn't happen because of deficiency of beriberi. लैक ऑफ थायमिन बिल्कुल सही है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बिकॉज एसेंशियल प्रोटीन, बेरीबेरी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो प्रोटीन की वजह से नहीं होगा। occurs in those countries where staple diet is polished rice, yes, because विटामिन की कमी हो जाएगी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हो तो। और कमियां क्या आ जाएंगी? नसों में सूजन, पैरालिसिस, मसल डिटीरियोरेशन, प्रोग्रेसिव एडिमा यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमिनल रीजन, मेंटल डिटीरियोरेशन यानी मानसिक मंदता, द मेंटल दैट इज द सीएनएस विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ द malnutrition. So these are the symptoms that prevail. तो ऑप्शन नंबर E, ऑप्शन नंबर D और ऑप्शन नंबर B सही है। That means the correct option is option number D. B, D and E is correct. Next question, question number 8. Question number 8. Protective components of food are, तो carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, amino acids and nucleic acids. ये हमें न्यूट्रिशन से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी, एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन। अभी हमारे जो बॉडी के कंपोनेंट्स है वो फंक्शन कर पाएंगे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द प्रॉक्सिमेट और द प्राइमरी कंपोनेंट्स, प्रॉक्सिमेट और प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेकिन इसके अलावा आपके शरीर में कोई कमी ना रह जाए, कोई बीमारी एक्स्ट्रा ना हो जाए, उसके लिए विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की जरूरत पड़ती है, बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। वो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते। रिमेंबर, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. They are only responsible for protecting the body from disorders and abnormalities. So protective components are minerals, vitamins and water. Option number A is the right option. अगला सवाल question number 9. Which of the following is correct location of Meissner's plexus? So Meissner's plexus is present in serosa. Meissner's plexus is present in serosa के बाद we have muscularis, then we have submucosa, and then we have serosa, muscularis, submucosa, and lastly we have mucosa, right? So this is serosa, this is muscularis, and this is submucosa, and this is mucosa, right? तो मस्कुलरिस लेयर में वी हैव माइंट्रिक प्लेक्सस, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स विच इज कॉल्ड ऑरेबैक और माइंट्रिक प्लेक्सस, एंड सब म्यूकोजा में वी हैव अगेन अ नर्व सप्लाई विच इज कॉल्ड मेस्नर्स प्लेक्सस, responsible for peristalsis of the small intestine or alimentary canal. So correct option will be option number C. Option number C is the right answer. I hope it is clear. Option number C becomes the correct option. अगला सवाल question number 10. Which of the following is true regarding the source and nature of enamel? Enamel is secreted from ameloblast cell. तो option number A और B गलत हो गया.
And enamel is ectodermal in origin. It is not mesodermal in origin. It is not a soft tissue derived part. It is a hard tissue derived part, and that's why it is ectodermal in origin. Ectodermal is a germinal layer. The three germinal layers that we have is ectodermal, mesodermal and endodermal. So correct option goes to option number D. Next question, question number 11. Choose the correct enzyme substrate pair. कौन सा enzyme किस substrate पे कार्य करता है? Lipase on carbohydrates, no. Lipase acts on fats. Maltase, lactase acts on lactose. Amylase on protein, amylase acts on carbohydrates. Renin is a protein digesting enzyme and casein is a milk protein. So correct option is option number C. I hope these questions are getting cleared by each one of you. Yes or no? अगला सवाल, question number 12. The following are absent in case of upper 1/3 part of esophagus. So if we see our esophagus, this is a man. Very bad picture of a man. Let me draw it once. This is a person. This is the buccal cavity, and this is esophagus, and this is getting connected to stomach, right? The upper 1/3 part is called cervical part. The middle and the lower part is called thoracic and abdominal part. So this is the thoracic part and this is abdominal part. The cervical part is voluntary because it is composed of skeletal muscles. But thoracic and abdominal part are involuntary because they are composed of smooth muscles. And this is the reason why for peristalsis, brain induces a worm-like movement which is only noticed in thoracic and abdominal part, not in cervical part. So correct option goes to option number A, B, C or D. The visceral peritoneum, serosa, digestive gland and myonteric plexus. They are present, but in upper 1/3 part, which is absent, skeletal muscles is present. Baki, serosa, myonteric plexus and digestive gland, all three are absent. Neither serosa is present here, serosa is lacking here. Neither any digestive gland is present here. Neither myonteric plexus is present. It is under voluntary control. Why? Because skeletal muscles, कंकालीय मांसपेशियां मौजूद होती हैं, तभी कोई चीज अटकता है तो निगल लेते हो. Getting my point? अगला सवाल, question, the correct answer will be option number D. अगला सवाल, question number 13. Mark the correct statement. इनमें से सही बयान आपको चूज करना है. सही जवाब इनमें से क्या होगा? फटाफट से बताइए. A, B, C or D? Take your time and be fast with your answers. In 1/3 part of esophagus, both myonteric plexus and mesonal plexus are absent. It is present, not absent. तो पहला वाला incorrect है. दूसरा, carboxypeptidase is an exopeptidase acting on N terminal of peptide chain. Wrong. It acts on C terminal of peptide chain. इसलिए option number दूसरा wrong. Galactosemia is a metabolic genetic disorder due to deficiency of enzyme uridyl transferase. Correct. And nucleotidase and nucleosidase enzymes are present in pancreatic juice. This is incorrect. Why? Because it is present in. बताइए. The correct answer will be A, B, C or D. Speed बढ़ाना होगा. इतना धीरे काम करने से नहीं चलेगा. They are present in not. They are present in. They are not present in pancreatic juice. They are present in intestinal juice, also called succus entericus, which consists of amylolytic, proteolytic and lipolytic enzymes. Very important. So correct option goes to option number C. अगला सवाल, question number 14. Sphincter of Adda. This is liver. Liver से left hepatic duct, right hepatic duct. यहां से gall bladder का समझ लो ये cystic duct. They come and form the common bile duct. ठीक है. यहां से आपकी ये मान लो पैनक्रियाज है. दिस इज, और ये यहां स्टमक से आ रहा होता है. ठीक है, ये स्टमक से आ रही होती है. ये स्टमक है. दिस इज योर स्टमक. दिस इज योर पैनक्रियाज. दिस इज योर सिस्टिक डक्ट. This is your right hepatic duct. This is your left hepatic duct. The left hepatic duct, right hepatic duct forms the common bile duct. Common hepatic duct. Common hepatic duct, cystic duct forms the common bile duct. This is common bile duct. This is common
bile duct, and this common bile duct along with pancreatic duct forms the hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct. This is your hepatopancreatic duct, and hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Adda. The sphincter of Adda is this one. This is sphincter of Adda. So correct option goes to option number A. I hope it must be clear with respect to the diagram, right? Agla sawal, question number 15. Which of the following is correct pairing of site of action and substrate of renin? Mouth starch, small intestine protein. Wrong. Stomach casein, milk digesting protein is renin, and renin acts within stomach on milk to convert into casein, which is milk protein. Option number C is the right answer. Next question, question number 16. If liver is removed, the compound which is not absorbed by mucosa, अगर liver ही हटा दिया तो fats absorb नहीं होंगे, because bile is being produced by liver, and bile contains bile salts which is responsible for emulsification of fats. So incorrect क्या नहीं absorb होगा? Fats will not get absorbed. Option number C will be the right answer. Next question, question number 17. What is common among amylase, renin and trypsin? Amylase, renin और trypsin में आम क्या है? So renin, trypsin are protein digesting, proteolytic enzymes. Amylase is not a proteolytic enzyme, but all three are proteinaceous in nature. All three are proteinaceous in nature, and that was the question कि what is common? तो common यही है कि all three are proteinaceous in nature. So correct option goes to option number C. सभी प्रोटीन है. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच एक्ट इन लो पीएच. रिमेंबर लाइसोसोम्स. लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, दैट पोजेस एन एक्टिव हाइड्रोजन पंप, प्रोटॉन पंप. What is the function of this active proton pump? The proton pump converts the pH of cytoplasm to a lower pH, और अब लाइसोसोम का जो साइटोप्लाज्म होती है इसकी pH एसिडिक हो जाती है, और साइटोप्लाज्म की जो pH होती है वो अल्कलाइन होती है. तो साइटोप्लाज्म की pH इज अल्कलाइन, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव प्रोटॉन पंप लाइसोसोम की जो प्रोटोप्लाज्म होती है दैट बिकम्स एसिडिक, ड्यू टू विच acid hydrolases are formed, and these acid hydrolases comprises of carbohydrases, which are carbohydrate digesting enzymes. We have proteases, which are protein digesting enzymes. We have lipases, which is a lipid digesting enzyme. We have nucleases, which is nucleic acid digesting enzyme. So correct option goes to option number C. Hydrolases will be the right answer. Next question, question number 19. Which of the following hydrolyzes internal phosphodiesterase bonds in a polynucleotide chain? So this is the function of endonuclease. Endonuclease breaks the phosphodiester bond, inner phosphodiester bond in a polynucleotide chain. Option number C becomes the right answer. Next question, question number 20. Brunner's gland are present in स्टमक, इसोफेगस, इलियम या फिर डुओडेनम. ब्रनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, फटाफट से बताइए ब्रनर ग्लैंड्स कहां पाए जाते हैं? विच रीजन, इन विच रीजन ब्रनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट? ब्रनर्स ग्लैंड किस में पाए जाते हैं? स्टमक? नो, दे आर नॉट प्रेजेंट इन स्टमक. इसोफेगस? नो. इलियम और डुओडेनम? Ileum is a large part of small intestine where it is not present. Duodenum is the first part of small intestine where it is present. Option number D is the correct option. Next question, question number 21. The enzyme enterokinase helps in the conversion of paracasein to casein, trypsinogen into trypsin, pepsinogen into pepsin या proteins into polypeptides. Trypsinogen को trypsin में बदलने के लिए enterokinase की जरूरत पड़ती है. Option number B is the right answer. पैराकेजिन को केजिन में बदलने के लिए रेनिन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत था. पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए ट्रिप्सिन की जरूरत होती है, पेप्सिन की जरूरत होती है. पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल? पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलती है? HCl निकलती है, और ये पेप्सिन फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है. तो ऑप्शन नंबर सी गलत.
and proteins into polypeptides. This is because of the action of पेप्सिन. अभी आपने देखा प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में पेप्सिन भी तोड़ती है और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन भी तोड़ती है. तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22. एक्टिवेशन ऑफ प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज. प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो इट इज ट्रिप्सिन. Trypsin is responsible for converting procarboxypeptidase into carboxypeptidase and that happens in small intestine. ध्यान रखिएगा. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ट्रिप्सिन का काम पैनक्रियास से निकल के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखा जाता है. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is the function of enterogastrone? Enterogastrone is a gastric inhibitory peptide. तो ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यस और नो? A will be the correct option. That is why enterogastrone is also called GIP hormone, gastric inhibitory peptide. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24. Contraction of gallbladder is caused by cholecystokinin, enterogastrone, gastrin या secretin. Contraction of gallbladder, पित्ताशय की संकुचन, because left hepatic duct, right hepatic duct of liver secretes bile but in small amount. Majority of the bile is stored in gallbladder, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं. Now when the gallbladder will start releasing the bile in maximum amount, it is done under the action of which hormone? That is the question, and the correct answer is cholecystokinin, pancreozymin, which is secreted from the duodenal part of small intestine. Option number A will be the right answer. ये कहां से निकलता है? सवाल पूछेगा तो duodenum ध्यान रखिएगा, which is the first part of small intestine. Next, the hormone that stimulates the stomach to secrete gastric juice, that is gastrin, which is secreted from G cells of gastric glands, जिसे हम Argentafin cells भी कहते हैं. Option number C will be the right answer. Next question is question number 26. Cholecystokinin and duocrinin are secreted by adrenal cortex से mineralocorticoids and glucocorticoids secrete होते हैं. तो option number A गलत हो जाएगा. थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 हार्मोन्स यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन सिक्रीट होते हैं, इसलिए बी गलत हो जाएगा. इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज बचा तो कोलिसिस्टोकाइनिन एंड डुओक्रिनिन दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन नॉट पैनक्रियाज. पैनक्रियाज से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस आर बीइंग सिक्रीटेड. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंटेस्टाइन. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27. Which part of the body secretes the hormone secretin? तो secretin is secreted by duodenum. Option number D is the right answer. Neither ileum, esophagus or stomach. ना ही ग्रास नली से, ना ही अमाशय से, ना ही शेषांत्र से. Option number D is the right answer. Next question, question number 28. Which of the following hormones is not secreted by duodenum to inhibit the gastric motility? Not secreted. So GIP hormone is secreted to inhibit. Enterogastrone is also secreted to inhibit. Secretin is also secreted. Enterokinase, ये जो वो हार्मोन हो जाएगा, that is the hormone which is not secreted because enterokinase is not a hormone, it is an enzyme. और यहां सवाल क्या पूछा है? Hormones. ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? हार्मोन्स हैं, और ये अकेला क्या है? एंजाइम है. तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following carries glucose from digestive tract to liver? इनमें से कौन सा एजेंट है या फिर ट्रांसपोर्टिंग वेसल है जो कि ग्लूकोज को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिवर तक ले जाता है? तो स्टमक और एब्डोमिनल रीजन से न्यूट्रिशन को लिवर तक ले जाने का काम हेपाटिक पोर्टल वेन का है. तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द राइट आंसर. पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम. hepatic artery is carrying the pure blood to liver, and none of these होगा नहीं. Option number C is the right answer. Next question 30. In case of vertebrates, कशेरुकियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो लैक्टियल्स कहाँ मौजूद है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, एंड विलाई के अंतर्गत आपको ऐसे लैक्टियल्स मिलती हैं जहां पे अल्टीमेटली आफ्टर फैट्स गेटिंग अब्सॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, they are stored in this lacteals. These are your lacteals and they all are present in small intestine. So correct option goes to छोटी आंत, small intestine. Option number C becomes the right answer.
This was your first set of DSSSB nursing officer examination where I discussed almost 30 questions on digestive system. These sessions will be continued in further sessions to come, that is regularly between Monday to Friday. Tomorrow we will be discussing some questions on that will be a surprise. Let's not reveal it because अगर कल आपको बता दिया कि मैंने टॉपिक क्या है, there might be a situation that you will be able to solve most of them, but I want कि इस बार DSSSB में ये जो 1500 वैकेंसीज हैं उसमें आपका नाम जरूर लिखा हो. तो जस्ट गो विद द फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग. कल आपकी जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी पे नहीं, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पे होगी. तो कल का आपका जो सेशंस रहेगा वो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पे रहेगा. आज फिजियोलॉजी पे हो गया, कल फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग विल बी योर टॉपिक. And yes, if you are preparing for DSSSB nursing officer examination, what you need to do is type Adda 24/7 on Google, hit the first website that you can see, go to all courses, type, click on teaching, and in DSSSB non-teaching examinations, click on view all. You will see DSSSB non-teaching examinations as in DSSSB nursing officer batch. Where it is, you will see it here, DSSSB nursing officer batch. Just click on it. You will get to see the entire characteristics of this batch. सारी विशेषताएं इस batch की दिख जाएंगी, and then apply coupon code Y223. You will get a maximum discount and you can have this batch with a validity of 6 months only at $22.99 at 77% discount. There you will be getting to learn all those articles and content that is required for qualifying and clearing this examination. Apart from that, free MCQ practice is being conducted daily at 9 p.m. on Teachers Adda 24/7. So don't miss this practice sets which I have started from today, and let's continue it in our upcoming sessions so that we can benefit ourselves for the best for this vacancy जिसे हम छोड़ना किसी भी सूरत पे नहीं चाहेंगे. Till then, take care of yourself and have a wonderful evening ahead. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.